इज़ अ डे 2 इन वियतनाम और आज हम हनोई से निन बिन ट्रैवल कर रहे हैं। वी बुक्ड द लिमोजिन कार और दिस इज़ 8:30 इन द मॉर्निंग टुडे। यहाँ से वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2 घंटे लगने वाले हैं निन बिन पहुँचने के लिए। सो कैच यू अप लेटर। एक चीज़ तो यहाँ पर बहुत अच्छी है वियतनाम में कि द लोकल पीपल हियर आर वेरी वेरी फ्रेंडली और वो टूरिस्ट को देख के हमेशा बहुत बहुत हैप्पी वे में रिस्पॉन्ड करते हैं। सो अभी हम पहुँचे हैं हमारे निन बिन पे जहाँ पर हमने हमारा स्टे बुक किया है। सो दिस इज़ अ होम स्टे बेसिकली बट इट डजेंट लुक लाइक वन। यू कैन जस्ट हैव अ लुक अराउंड। तो अभी हम निन बिन में जो फेमस बोट राइड ट्रिप है वो लेने के लिए आए थे। दिन में हमने कुछ भी नहीं किया। वी जस्ट केम फ्रॉम हनोई एंड वी रेस्टेड थोड़ा सा, हैड लंच और अभी बज रहे हैं दोपहर के लगभग 3:30 एंड वी आर गोइंग आउट फॉर द डे द बोट ट्रिप नाउ। अभी हम लोग ने 2 लोगों के लिए टिकट ली है। पर पर्सन दे चार्ज यू 120 रुपीज़, 120 वियतनामीज डॉग फॉर 1 पर्सन। और जो बोट आप ले रहे हैं उसके लिए 150 है, विच इंक्लूड्स द बोट राइड फॉर 2 पीपल। तो So now we are starting with the boat ride and let's see कैसा जाने वाला है ये। Hopefully it's one of the best experiences that you can have here. If you are a nature lover and love to see nature in its purest form, you should spend a day or two at Ninh Binh. Ninh Binh is the place which offers breathtaking views of limestone hills,
rice paddies, pagodas, and temples, and nature in its purest form. It wouldn't be wrong to call it a paradise on earth. There are multiple activities to spend your day at Ninh Binh that you can choose from. Tam COC boat ride is a 90-minute to 2-hour activity. The boat takes you through the tropical vegetation, 3 small blinding caves under the limestone hills, and beautiful landscapes. If you take a morning ride, you could also see wildlife such as mountain goats, variety of birds. You could take an aerial view of this entire boat riding region from the top of the lying Dragon Mountain near the Mua Caves. It is also a UNESCO World Heritage Site. To add to your thrill, let me tell you all, some parts of the Hollywood movie King Kong were shot here. Even though we tried to capture the beauty through our lenses, no words can actually explain the unbelievable scenic beauty that you can see and experience during this boat ride in Ninh Binh. It's quite of an experience, and I would recommend you to take it and not miss this one. We just finished with our boat ride trip और ये बहुत ही अच्छा ट्रिप था. If you are any time here in Vietnam, please come to Ninh Binh और ये boat ride trip for Tam COC. Please लो. It's very very beautiful and the experience is just ethereal. Good morning guys, how are you all? Hope you're doing good. This is our day 3 in Vietnam and we are at Ninh Binh. आज अभी सुबह के 6 बज रहे हैं and we are going to our next spot, that is the Mua Caves. This is on top of the hills और कुछ 500 steps की चढ़ाई है. So let's go there and check out how this place is and how this looks like. तो कल रात यहाँ तक ये थोड़ा दूर है हमारे यहाँ से. So we got ourselves a scooter from a shop nearby. We rented it और हमें पड़े कुछ around 100,000 VND. ओके सो अब हम पहुंच चुके हैं मुआ केव्स के एंट्रेंस पे. अब यहाँ से हम चढ़ना स्टार्ट करेंगे विच इज़ दे से अराउंड 500 स्टेप्स. तो कम से कम 1 घंटा लगने वाला है हमें टॉप तक जाने के लिए. तो लेट्स स्टार्ट. एंट्रेंस टिकट टू मोआ केव्स. यहाँ पे हर जगह के लिए एंट्रेंस टिकट्स हैं विच कॉस्टेड अस 100,000 VND.
अभी ये इंडियन में कन्वर्ट करने में मुझे थोड़ा सा अभी भी टाइम लगेगा। Mua Caves is another spot from the ecological tourism of Vietnam in Ninh Binh. It has small caves at the foothills and a 500-step climb to reach the Lying Dragon at the top of the Mua Cave hills. The top viewpoint from the Lying Dragon offers a breathtaking view of the limestone mountains, the river, the paddy fields, and the complete Trang An region. अभी हम एंटर कर गए मुआ केव्स के अंदर। As you can see from here, there's a spring inside. Let's come. Humid as Let's go to the other one. Okay, I think there are no more caves here. एक ही था वहाँ पीछे। Okay, so this is the starting point of Mua Caves. अभी यहाँ से हमने चढ़ना स्टार्ट किया है। Let's see कितना टाइम लगता है अभी। बाकी है। सीढ़ियाँ कहीं कहीं छोटी है और कहीं थोड़ी ऊंची है, बट इट्स स्टिल अ कंफर्टेबल क्लाइंब फॉर दोज हु क्लाइंब रेगुलरली। तो आप अगर इस पूरे जगह को देखेंगे तो इस पहाड़ के जो स्टोन्स है ना, इट एक्चुअली लुक्स लाइक द बैक ऑफ द ड्रैगन। ऐसे थॉर्नी और शार्प स्टोन्स हैं यहाँ पर, which looks really beautiful.
ऊपर सिर्फ वो ड्रैगन का स्ट्रक्चर है जिसमें जाने के लिए स्टेप्स नहीं है. इट्स ऑल It's all about the climb. yeah. So this is the top of the Mua Caves. तो अब हम वापस नीचे आ चुके हैं. इट टुक अस नियरली 2 आवर्स. 2 आवर्स से कम हमें लगा ऊपर जाने और वापस आने में, क्योंकि हम सुबह आए थे इसलिए बिल्कुल भी लोग नहीं थे. इट वाज नॉट एट ऑल क्राउडेड और बिल्कुल खाली था, तो हम बिल्कुल आराम से चले गए. एंड इट वाज रियली वेरी विंडी अप देयर, तो गर्मी या तकलीफ़ भी नहीं हुई चढ़ने की वजह से. सो आई वुड क्लियरली रेकमेंड कि लोग यहाँ बोलते हैं सनसेट के समय आओ, बट इफ़ यू कम इन द मॉर्निंग यू विल फील, आई फील कि आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा ये जगह, क्योंकि सनसेट की वजह से फेमस है, तो वो ओवर क्राउडेड भी होगा सनसेट के टाइम पे. बट इन द मॉर्निंग यू कैन टेक दिस कंप्लीट क्लाइंबिंग एंड बैक विद इन 2 आवर्स. एंड प्लीज़ अपने साथ पानी ले जाना मत भूलिए, क्योंकि ऊपर जो शॉप्स हैं बहुत ही कम है और मॉर्निंग में शायद आपको ओपन भी ना मिले, तो अपने साथ प्लीज़ पानी ज़रूर लेकर आएं.